Let's start with the final chapter of your basic accounts batch. That means by next week does not mean that after that, if you are having any kind of lectures, any kind of doubts related to the subject of accounts, you cannot ask me. तुम लोगों ने पूरे पैसे दिए हुए, तुम पूरे पैसे की वसूली कर सकते हो. So you can ask any kind of doubts even after that. There is no problem. नाविन एकदम खुश हो गया. सर जैन बंदा हूं, पैसे की वसूली कैसे नहीं करूंगा. Well, so the point is what, that when you have been writing the transactions, you have made the entries into the books of accounts, you did the posting to the ledger accounts, you did the balancing of that, and you prepared the trial balance after that. Now, with the help of this trial balance and certain additional information, we are supposed to prepare our financial statements. So let's understand these financial statements first, and then we'll go ahead with how do we prepare these financial statements. Let me just put forth the screen in front of you now. So if you just observe back to our original kind of diagram that we had prepared, that on top we have something called as an event. When this event is associated with the flow of money or money's worth, it becomes a transaction. This transaction is then recorded in either the subsidiary books or the journal. Then it is transferred to the ledger. These ledgers are balanced, and based on that you prepare the trial balance. Up till this is what we have discussed. And based on this trial balance, you'll prepare the income statement of the business called as profit and loss account, and you'll also prepare a positional statement of the business called as balance sheet. So these two, प्रॉफिट एंड, इसी के लिए तो हम लोग सारी अकाउंटिंग कर रहे थे कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी कितने हैं, कितनी है, हमने क्या असेट्स बनाई, हमारी क्या लाइबिलिटीज हैं, ये आइडेंटिफाई करने के लिए ही तो हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं. एंड दैट इज डन बेस्ड ऑन द matching principle, based on the periodicity concept, based on the business entity concept. I've already talked about those concepts, if you remember. I've talked about matching concept in front of you. I've talked about the periodicity concept, the going concern concept. जब हम लोग बहुत सारे adjustments की बात कर रहे थे, उस समय पे मैंने आपके सामने अलग-अलग concepts के बारे में discussion किया था. Wherever again it will come, again I'll be having the discussion with reference to that. All right. Now, these two is what we are going to talk about. This is what we call as the financial statements or the final accounts. In fact, as per Accounting Standard 1, there are 31 accounting standards in all. Of that, 4 are been merged with the Ind AS. So now the applicable are 27 accounting standards. Now, these accounting standards
are basically drawn, formulated for the purpose of bringing a kind of objectivity in the financial statements. Objectivity in a sense that when I'm preparing my books of accounts, when I'm recording the transactions in my books of accounts, whether it is recorded by Manish Tarteja, whether it is recorded by Abhishek Zavre, whether it is recorded by Rishabh Jain, all the people doing the accounting should be following the same set of principles, the same set of rules. And for that purpose, we prepare the books of accounts following the different concepts of accounting and the different accounting standards. The accounting standards are basically laid down, formulated, implemented by the Accounting Standards Board of the Institute of Chartered Accountants of India. The ICAI has a separate board called as Accounting Standards Board. And that Accounting Standards Board prepares these accounting standards and formulates and implements it. अब क्यों बनाए गए accounting standards? So that you and me follow the same set of systems, same set of rules when we are thinking, when we are assessing certain transactions. All right. And by that way, what will happen is whether you or me, whomsoever is preparing the books of accounts, will be preparing on the same lines or not. अगर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं होते या फिर ये अकाउंटिंग कंसेप्ट्स नहीं होते तो जिसको जिस तरह से प्रिंसिपल समझ में आते उसने उसी तरह से एंट्रीज की होती. To avoid that subjectivity, to avoid that kind of differentiation of thinking, because everyone will have their own respective opinion, to avoid those opinions, these accounting standards and accounting concepts are necessary. And that's why we follow matching concept, we follow the going concern concept, we follow the periodicity concept, we follow the conservatism concept. ये सारे इसीलिए follow करते हैं. All right. So accordingly, the accounting standard one, the BAP of all accounting standards, why I said so is because if for a particular transaction, you do not have any specific standard, then the rules laid down by accounting standard one are applicable for every of such situation. Like, I'll give you a simple example. There is an accounting standard called as AS11. In fact, जब तक आप इंटरमीडिएट में आओगे आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इग्नोर करके इंड एएस को फॉलो करोगे. इंड एएस इज व्हाट? Are Indian accounting standards which are compatible, which are in line with the international accounting standards called as IFRS. You just write down IFRS. It is International Financial Reporting Standards. IFRS is International Financial Reporting Standards. Below that, write down IND-AS. उसके आगे लिखो, these are Indian accounting standards these are Indian accounting standards converged with CONVERGED, converged with IFRS. Converged means made compatible to. That is converged with IFRS. ये क्यों लाए गए? Because many of our
Indian companies have now become the MNCs, the multinational companies. And because they have become the MNCs, so they are not required to do their reporting only in India. उनको अपने financial statements इंडिया के बाहर भी publish करना compulsory होता है, wherever they are doing the business. Like if you take the example of the company like Bajaj Auto, it is not only marketing but having the business all through 77 countries. If you take the example of Aditya Birla Group, it is having the existence in approximately 170 countries. If you take the example of company like Infosys, it is having the existence in around 42 different countries. They are not having the clients only in those 42 countries, but they are doing business in many of those 42 countries. तो क्योंकि ये वहां जाके भी बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि ये वहां जाके भी अपनी एक्टिविटीज करते हैं, तो इनको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ इंडिया में पब्लिश नहीं करने होते, बल्कि उन सारी कंट्रीज में भी करने होते हैं जहां वो बिजनेस कर रहे हैं. एंड फॉर दैट पर्पस अब वो हर कंट्री के हिसाब से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बार बार अगर बनाते रहेंगे, लाइक टेक फॉर एग्जांपल इन्फोसिस, जो छोटा मैंने कंट्रीज का एग्जांपल दिया, मान लो ये 25 अलग अलग कंट्रीज में काम कर रहे हैं, तो 25 कंट्रीज में अलग अलग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स अगर होंगे, अगर ये 25 कंट्रीज में अलग अलग अपने फाइनेंशियल्स पब्लिश करेंगे, तो इनका अकाउंट्स डिपार्टमेंट साल भर सिर्फ फाइनेंशियल्स ही बनाता रहेगा. You cannot have such kind of situation. So you need to make a certain financial statement which are applicable to all the world. आप वर्ल्ड की किसी भी कंट्री में चले जाओगे तो वो फाइनेंशियल सेम अप्लाई होंगे, ज्यादा से ज्यादा आप करेंसी का वैल्यू चेंज करोगे. लाइक इंडिया में पब्लिश करते समय आप इंडियन रुपीस यूज करोगे, अगर आप अमेरिका में प्रोड्यूस कर सबमिट कर रहे हो तो you'll be using the US dollars. If you are doing it in the Britain, you'll be using the pounds in that. If you are doing it in Germany or any of the European countries, then in that case you'll be using the euros in that. So point is what, आप करेंसी चेंज कर सकते हो, बट आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का तरीका सेम रहेगा. इजहार हर जगह वही होगा जो आप यहां कर रहे हो. हालांकि कहा जाता है कि समय और जगह के हिसाब से इजहार करना चाहिए, पर कुछ इजहार ऐसे होते हैं कि वो हर जगह सेम होने चाहिए, क्योंकि कुछ इजहार अगर बदल जाए तो उसमें इकरार होने के बजाय इनकार होना चालू हो जाता है. Isn't it? Well, your personal experiences are different. I don't know about it. The point is what, that when you are doing this common accounting standards by which you will be able to publish your financial statements anywhere in the world, that's why those are called as the financial reporting made compatible with the international financial reporting standards. हालांकि if the company is not in MNC, if the company is having its activities only in India, वो बेचारे हमारे देश के बाहर कभी झांकते भी नहीं है, तो वैसे लोगों को हम ज्यादा एक्सेसिव रिपोर्टिंग करने के लिए क्यों कहें? सो फॉर देम द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर एप्लीकेबल एंड नॉट द इंड AS. So there are two sets of accounting standards laid down by the Accounting Standard Board. One are called as only AS, what you are going to refer in your foundation and intermediate. Intermediate में भी majority of your syllabus will be covering only accounting standards. And two, the second set of accounting standards, what we call as IND AS, these are basically covered in detail at your CA final level. CA intermediate level पे उसका reference बहुत आने वाला है, but compliance, reporting, application, ये सारी चीजें आप लोग CA final level पे करने वाले हो. All right? तो थोड़ा सा ज्ञान मिला आपको, थोड़ा समझ आया क्या है ये. So let's come to our Indian, जो हमारे देश में हमारी देश की कंपनीज के लिए यूज किए जाते हैं.
नहीं तो तुम भी अचानक से अक्षय कुमार बन जाओगे, देश की मिट्टी से बना हुआ टाइल्स, कजारिया टाइल्स। बाकी लोग क्या चाइना से लेके आ रहे हैं मिट्टी? मतलब हद हो गई। आप एडवर्टाइजमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर इतना भी लोगों को इमोशनली मत अटैच करो ना, देश की मिट्टी से बना हुआ। तो सीरियसली बाकी लोगों को ट्रम्प साहब भेज रहे हैं अमेरिका से मिट्टी, कि वहां से बन के टाइल्स, वहां से मिट्टी आ रही है और यहाँ पे टाइल्स बन रही है। ना, कुछ कुछ तो सेंस होना चाहिए, दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। खैर ठीक है, अगर इनके पास सेंस आ जाए तो फिर वो एडवर्ट कैसे रहेगा? बिकॉज एडवर्टीजमेंट जितना सेंसलेस होता है उतना ज्यादा हिट होता है, आपको पता है। अगर आप कभी देख लो न्यूज़पेपर में, अगर किसी ने उल्टा छपा दिया, दिस इज बिगेस्ट टैक्टिक दैट इज यूज्ड बाय द एडवर्ट्स, दैट दे प्रिंट ऑन द रिवर्स साइड। मतलब ऐसा उल्टा प्रिंट करवाते हैं, पेपर आपका सीधा होता है, ये प्रिंट उल्टा करवाते हैं। क्यों? तो जब भी कोई चीज उल्टी लिखी होती है वो आप पहले पढ़ोगे। आप खुद ऑब्जर्व कर लो। मैं कई बार जब मैं लाइव क्लासेस लेता था ना, तो क्लास में ऐसे बुक उठा लेता था, नोट्स जो होते थे, बुक उठा लेता था, गलती से अगर वो बुक उल्टा अगर हाथ में आ गया तो इमीडिएटली सर बुक उल्टा है, सर बुक उल्टा है, सारे लोग हाईलाइट करते थे। और मैं इतने बार सीधा बुक लेके खड़े रहता था, कभी किसी ने नहीं बोला सर सीधा बुक लेके खड़े हो आप। So those are things, these are the things that they keep in mind, that nonsensical things work more as compared to the sensical ones. At least उससे मुझे पता चलता था कितने लोग मेरी तरफ अटेंटिव है। मतलब मुझे वो जीपी सर के जैसा बोलना नहीं पड़ता है, तुम आ जाकर बग ना, वो बोलते हैं ना तुम लोग को, ए मेरी तरफ देखो, नहीं बोलते। नाउ यू लुक एट मी, यू कीप अटेंशन टुवर्ड्स मी। सारे बंदे मन ही मन सोच रहे होते हैं कि पूरा टाइम अगर जीपी सर को देखेंगे तो उनकी स्क्रीन की तरफ कब देखेंगे हम लोग। एनीवेज, but that's how you keep getting attentive towards the lecture, you know, that's needed। क्योंकि मैथ जैसे सब्जेक्ट में अगर आप एक पॉइंट पे भी अगर इधर उधर हट गए तो तुम्हारी सारे उस कंसेप्ट की धज्जियां उड़ जाती है। और 12th स्टैंडर्ड तक के तुमने मैथ्स में क्या किया ये तुमको बहुत अच्छी तरह से पता है, इवन दो यू आर द साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट्स। सर सच में सर इतना अच्छा मैथ्स किया था ना हमने, अब जाके रियलाइज हुआ कि मैथ्स भी एक अच्छा सब्जेक्ट हो सकता है। वेल एनीवेज सर, खैर हमें वैसे भी फिजिक्स केमिस्ट्री से तो ज्यादा ही पसंद था। वो तो मतलब वो कैसा होता है ना, रिलेटिव इंटरेस्ट होता है। मतलब ये रिलेटिव इंटरेस्ट कैसे है कि अब जब आपके पास ऑप्शंस नहीं है तो जो अवेलेबल ऑप्शंस है उसी में से बेस्ट सिलेक्ट कर लो, दैट काइंड ऑफ थिंग। एनीवेज लेट्स कम बैक, ऑप्शंस की बात नहीं करते हैं यहाँ पे तो ज्यादा अच्छा होगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, द नेम ऑफ दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज डिस्क्लोजर of accounting policies। कि आपने आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते समय क्या क्या पॉलिसीज फॉलो की है। इफ दोज आर इन लाइन विथ व्हाट इज रिक्वायर्ड, if those are according to what is normal, then you are not supposed to do the reporting of that। आपने रिपोर्टिंग किस चीज की करनी है? अगर आप कोई चीज कंप्लाई करने वाले हो, अगर आपने कोई चीज कंप्लाई करनी चाहिए, एंड इफ यू आर नॉट कंप्लाइंग विद दैट, that is what you are supposed to report। If you have followed certain accounting policies which are deviating from the normal accepted accounting policies, those all have to be reported। Like in the accounting standard 1 itself, they have mentioned about 3 fundamental accounting assumptions। Now what are these 3 fundamental accounting assumptions? Going concern, accrual, and consistency। These are the 3 fundamental accounting assumptions, that when you are doing the accounting, it is presumed, it is accepted that you are doing the accounting considering your organization to be a going concern, that is you are making the distinction between capital and revenue expenditure,
You are making the distinction between fixed and current assets. Number two, you are doing it based on accrual. Means you are not trying to wait for the actual receipt or actual payment of the transaction. You are considering the right to receive or obligation to pay. Matlab, the moment you provide the services, you are expected to receive the money against that. So you should be recognizing that as an income in your books of accounts. The moment you have received the benefit from someone, you are liable to pay the money against that. So you should be recognizing that. You should be recording the transaction as an expense in your books of accounts. So that process is what we call as accrual. And it is presumed that whenever you are doing the accounting, you are following the concept of accrual. And the third one is consistency. That is, whatever accounting policies you have decided, you are following the same accounting policies from one accounting year to the another accounting year. You people are not changing the accounting policies from one year to another. Like take for example, if you have decided to charge the provision for doubtful debts, means what? You are anticipating a loss. There is a concept called as conservatism concept. Conservatism concept says that if you are anticipating an expense or loss, that should be recognized immediately in your books of accounts. But if you're anticipating an income or gain, that should be completely ignored. समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? सारे लोग प्रवचन में इतना लीन हो गए ना, मतलब अब अगर मैं 2-4 मिनट और कंसीडर किया होता ना, मतलब आई वुड हैव कंटिन्यूड, तो मैंने वहीं पे देखा होता कि 2-3 लोग तो झपकी ले ही रहे कि बस अब ऐसे डुलकी आ ही जाती. But anyways, so conservatism concept says this is what I did. I behave conservative, you know. If there is an anticipated loss, that has to be recognized immediately. अगर कोई विकेट गिरने वाला है तो उसको पहले से संभाल लो. So if there is an anticipated expense or loss, that has to be recognized. बराबर. अब ये प्रिंसिपल कंसीडर करके, ये वाला कंसेप्ट कंसीडर करके, आई डिड द रिकॉग्निशन ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट. कि मैंने कुछ कस्टमर्स को क्रेडिट पे गुड्स भेजे थे, पर उसमें से कुछ बंदे पक्के में धोखेबाज निकलेंगे. अब फॉर दीज धोखेबाज पीपल, आई क्रिएट अ प्रोविजन इन माय बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज एन एंटिसिपेटेड लॉस. वी कॉल दैट एज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट. अब ये मैंने पहले साल में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट किया, अगले साल में मैं प्रोविजन नहीं बना रहा हूं. इससे मेरे बिजनेस का प्रॉफिट अफेक्ट होगा या नहीं? And that is why the consistency concept says that if you have decided to follow a particular system, if you have decided to follow a particular policy, such system or policy should be followed consistently from one year to another. Otherwise, your financial statements will become non-comparable. You won't be able to compare your financial results from one year to another. अब ये तीन जो मैंने आपके सामने फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions रखे, which are those three fundamental accounting assumptions? Who can tell me what are the three fundamental accounting assumptions? सर रुको, गूगल करते हैं सर, गूगल करके बताते हैं सर. The going concern, accrual and consistency. These are three fundamental accounting assumptions. लिखो वहां पे, fundamental accounting assumptions. Going concern, like initially we were lot of concern about the about corona, but now that concern about corona is completely gone. That is not the going concern. Going concern means what? Once a business starts, it is expected to continue for a very long period of time. Yes or no? Next, accrual. हाँ, ये कंसेप्ट उतना क्रूएल भी नहीं है जितना उसका नाम है.
नहीं तो तुम सोचोगे सर नाम में ही क्रूएल्टी, हम क्या करें? अक्रूवल एंड थर्ड कंसिस्टेंसी which is required even in your studies. सर आपको क्या बताएं सर, 1 से 7 का लेक्चर होने के बाद में ना हमारी हालत ही नहीं होती है कि हम लोग कुछ और पढ़ाई करें। हम तो सारे एग्जॉस्ट हो जाते हैं। हमारे घर वाले हमारी इतनी चिंता कर रहे हैं आजकल कि हमारे बच्चे इतने मेहनती कहाँ से हो गए। इसके पहले जिंदगी में हमने इनको 1 से 1.5 घंटे से ज्यादा बैठते हुए नहीं देखा एक जगह पे। ये लोग 6-6 घंटे लेक्चर अटेंड करते हैं, वो भी एक ही मास्टर के बारे में सुन रहे हैं, वो समझ रहे हैं, सारी चीजें कंटिन्यू कर रहे हैं। Isn't it? So nice of you people, huh? Next one. Write down the line there. If these fundamental accounting assumptions are followed, if these fundamental accounting assumptions are followed, then no reporting thereof is to be done. Then no reporting thereof is to be done. However, if it is not followed, however, if it is not followed, it has to be disclosed as per AS1. It has to be disclosed as per AS1. Like it is similar to your studies, man. Now you people are doing CA course. तो अगर तुम दिन में 8-10 घंटे पढ़ाई कर लेते हो क्लासेस के अलावा, सपोज तुमने 4-5 घंटे और पढ़ाई कर ली, तो ये तुम किसी को बता नहीं सकते हो। किसी को जाके अगर बताया ना कि हम लोग क्लासेस के अलावा 4-5 घंटे पढ़ाई करते हैं, मतलब रोज के 12-12 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, तो पीपल विल इग्नोर यू। व्हाई? बिकॉज यू आर डूइंग सीए कोर्स, इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। बट अगर सपोज तुम क्लासेस के अलावा पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो दैट हैज टू बी डिस्क्लोज्ड, यार पढ़ाई नहीं हो रही है। Why? Because it is a fundamental assumption when you are doing CA course that you do studies up to 10 to 12 hours per day. तुमको पता है जब मैं सीए फाइनल में हुआ करता था, सीए इंटरमीडिएट में भी, my study time would start at 7 o'clock in the morning and would end at 11:30 in the night. That was my study time. Of that, I used to take the break of around 2 hours with the differentiations. कभी आधे घंटे का, कभी 1 घंटे का, ऐसे करते करते दिन में मैं लगभग 2 से 2.5 घंटे के ब्रेक लिया करता था, और बाकी टाइम सच में पढ़ाई किया करता था। सच्ची वाली पढ़ाई, मतलब वो दिल से जिसको बोलते हैं ना, वो वाली पढ़ाई। दैट वाज एट सीए फाइनल। सर फाउंडेशन पे आप कितना पढ़ाई करते थे वो बताओ सर, ये फाइनल वाइनल के चक्कर में हमको मत पाड़ो। At CA foundation level, our lectures used to be around 6 hours per day. क्योंकि हमारे अलग अलग फैकल्टी हुआ करते थे, हमको अलग अलग जगहों पे जाना पड़ता था। आई वॉज इन अमरावती व्हेन आई वाज डूइंग सीए फाउंडेशन। तो हर सब्जेक्ट के लिए सुबह 6 बजे से लेक्चर स्टार्ट होते थे हमारे, जब मैं फाउंडेशन में था। 6 o'clock मैंडेटरीली लेक्चर वुड स्टार्ट, और वो भी पहला पहला नहीं, फाइनल में टाइम लग गया था सारा मुझे। वो भी पहला पहला लेक्चर जो होता था मेरा, फाउंडेशन आई क्लियर्ड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ, आई गॉट 236 मार्क्स इन दैट। पहला पहला जो लेक्चर होता था सुबह 6 बजे होता था, और वो भी लॉ सब्जेक्ट का। जस्ट इमेजिन दैट सिचुएशन। तुमको तो एसएम सर पढ़ाते हैं, एसएम सर इतना वो वॉइस मॉड्यूलेशन एंड ऑल दैट, और उसमें मेरा पोता नील। दिस इज अ काइंड ऑफ डिफरेंट टॉपिंग ऑन द केक, यू नो। व्हेन ही स्टार्ट्स विथ मेरी बेटी ऐश्वर्या,
And then when the story continues, you know, तो ये सारी चीजें हमारे सामने नहीं होती थी. Well, my professor who taught me the subject of law, he used to literally read those statements and would explain that from the subject of law. That we never had these kind of stories or something like that when we did our CA foundation. तो तुम्हारे पास तो इंटरेस्ट भी है. सोचो, जस्ट इमेजिन दैट सिचुएशन. सुबह 6 बजे मास्टर तुम्हारे सामने खड़ा है, मतलब ऐसा भी नहीं कि स्क्रीन पे है. सुबह 6 बजे मास्टर तुम्हारे सामने खड़ा है और क्लास में सब मिला के 25 बच्चे हैं. तुमको सोने का भी स्कोप नहीं, क्योंकि अमरावती छोटी प्लेस, कम बच्चे होते थे. 25 स्टूडेंट्स ऑल ओवर इन द क्लास. और उस समय पे तुम्हारे पास सोने का भी स्कोप नहीं है. सुबह 6 बजे क्लास अटेंड करना है, क्योंकि अगर क्लास अटेंड नहीं करते तो घर पे शाम को मास्टर पहुंच जाता था. बिकॉज हिज ऑफिस वाज क्वाइट नियर टू माय शॉप, माय फादर शॉप. तो शाम को उनके पापा, हमारे जो सर थे, उनके पापा हमारे दुकान पे आ जाते थे कि तुम्हारा बेटा आज सुबह लेक्चर को नहीं आया था. दिस वाज द काइंड ऑफ सिचुएशन. छोटा गांव है, लोग पहुंचने को बहुत समय नहीं लगाते हैं वहां पे, तो अटेंड भी कंपलसरी करना पड़ता था. तो 6 से लेके तो 12 बजे तक हमारे लेक्चर्स हुआ करते थे, अलग अलग जगहों पे जा जाके. और उसमें ट्रैवल टाइम भी, और ट्रैवल भी कैसे, तो साइकिल पे घूमते थे हम लोग. दिन का रोज का 20 से 25 किलोमीटर साइकिल चलाया करता था उस समय में. एंड उसके बाद ऑन अ डेली बेसिस वी यूज्ड टू डू द स्टडीज फॉर अराउंड 5 आवर्स पर डे. मैंडेटरीली, मैंडेटरी 5 आवर्स पर डे. जिसमें से वी हैड मेड अ ग्रुप. वो देयर वाज दिस गर्ल माधवी एंड देयर वाज दिस पर्सन नितिन. हम तीनों लोगों का एक ग्रुप था. हम लोग ग्रुप स्टडी किया करते थे. रोज शाम को 3 घंटे फिक्स बैठा करते थे. शाम को 5 से 8 हमारा फिक्स टाइम था. एंड वी डिड दिस फॉर अ पीरियड ऑफ अराउंड 6 months. एंड दैट वर्कड फैंटास्टिक फॉर मी. And that seriously makes a lot of difference. Your consistency of your performance will take you to a different level altogether. क्या होता है, हम लोग एक दिन बहुत अच्छी पढ़ाई कर लेते हैं, अगले दिन पे वही माहौल में होते हैं हम लोग. यार कल मैंने 6 घंटे पढ़ाई की थी, और अगले एक हफ्ते तक के 6 घंटे वाली पढ़ाई याद रहती है. एंड दैट्स व्हाई फॉर द होल वीक वी डोंट डू द स्टडीज, एंड दैट्स नॉट करेक्ट. मेडिसिन थोड़ा थोड़ा करके लोगे ना, तो उसका इफेक्ट होता है. अब सपोज तुमको कोई अगर सिचुएशन आ जाती है, तुमको डॉक्टर ने एंटीबायोटिक दिया, तो 6 के 6 एंटीबायोटिक हम लोग एक साथ नहीं लेते हैं. उससे तो साइड इफेक्ट हो जाएगा. वी आर एक्सपेक्टेड टू टेक वन एंटीबायोटिक एट अ टाइम फॉर सिक्स डिफरेंट टाइम्स और नॉट. द सेम वे इट अप्लाइज टू द स्टडीज ऑल्सो. दैट यू डू one and a half hour का स्टडीज, टेक अ ब्रेक, अगेन one and a half hour का स्टडी, टेक अ ब्रेक. ओनली डू 3 hours का स्टडीज टू स्टार्ट विथ. यू डू दिस फॉर अ मंथ, for one continuous month, forcefully same time schedule करो. Don't sit for the studies at the different times कि सुबह में बैठ गए, आज शाम को बैठ गए. Don't do something like that. Do the studies at the same schedule, क्योंकि जब same schedule होगा ना, तो your mind will get scheduled with that. आपका brain automatize हो जाएगा उसके साथ. And when you will have that time, automatically तुम्हारा link लगना चालू हो जाएगा, तुम्हारा पढ़ाई ज्यादा होगा उस पीरियड में. Try to have the same place for doing the studies. Same place does not mean exactly inch by inch, millimeter by millimeter मैच करके रखो कि यही एरिया में मैं बैठूंगी. You can have a particular area wherein you'll be sitting. And when you do something like that, mind well. मैं बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ ये तुम लोगों को, क्योंकि मार्च एंड तक तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाना है, और उसके बाद में तुमको जो प्रेशर आएगा ना पढ़ाई का, वो अगर तुमको नहीं आने देना है, instead of having the tension, if you want to have the confidence in the month of April, I would simply suggest you people, क्योंकि तुमको फरवरी और मार्च में बीकॉम का बहुत ज्यादा प्रेशर आने वाला है. मैं अभी बोल के रख रहा हूं. वी आर इन द मंथ ऑफ दिसंबर. क्यों प्रेशर आने वाला है? बिकॉज इन द मंथ ऑफ February you will be required to submit the practicals into the colleges. By that time the colleges will surely start their activities, और तुमको जाके सबमिट करना पड़ेगा लाइन में खड़ा रह के, विदाउट सोशल डिस्टेंसिंग, विदाउट मास्क. तुम लोग ये करने वाले हो, मुझे पता है. आई एम टेलिंग दिस विद द 100% सीरियसनेस. और उसके बाद तुम्हारा मार्च में आएगा बेकाम एग्जाम.
जो FY BCom तुम्हारा चल रहा है ना, उसका भी एग्जाम आने वाला है. So if you want to handle that properly, you need to have confidence in your CA foundation. क्योंकि बाद में इस चीज का प्रेशर बिल्ड होने वाला है. If you don't want that, try to perform from now. That will work very well for you people. Right? So consistency is the key. Come back. Discuss. क्या लिखा तुम लोगों ने? Aditya, can you tell me what did you write? If these fundamental accounting assumptions are not followed, Then the disclosure of that is required as per accounting standard 1. yes. हाँ, बस उतना ही था. So वही मैं एक्चुअली वहां से यहाँ आ गए हम लोग. मास्टर कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है देखते देखते हमको भी समझ नहीं आता है, पर ठीक है, ज्ञान की बातें करता है. सुबह सुबह प्रवचन सुनना भी अच्छा लगता है, घर वालों को भी लगता है. जो घर वाले बैकग्राउंड में सुन रहे हैं ना, they would vouch on this and they would say yes, this master is saying correct. है ना? तुम्हारे जो पेरेंट्स अगर आसपास में होते हैं, कई बार मतलब वो स्पीकर चालू रह जाता है और पेरेंट्स सुन लेते हैं मास्टर क्या बोल रहा है, तो अचानक से उनको फील आता है यार यही चीज तो हम लोग रोज इनको समझा रहे हैं, इनके पल्ले ही नहीं पड़ रही है इनको. तो ये तो कहते हैं नहीं हम कॉमर्स वाले हो गए, अब तो हमारा कोई लेना देना ही नहीं रह गया पढ़ाई के साथ. Isn't it? Well, anyways, come back. So this disclosure of accounting policies require every organization to prepare the general purpose financial statements. Now, why these are called as general purpose financial statements? Understand? An organization deals with multiple of the agencies, multiple of the entities. Like it deals with the banks, their customers, their creditors, the other lending institutions, government authorities, and so on and so forth. And when the organizations are dealing with these multiple of the agencies, each such agency will be expecting to have the different kind of disclosure from the organization. इनकम टैक्स अथॉरिटीज को चाहिए कि आप इनकम ठीक से कैलकुलेट कर रहे हो नहीं. जीएसटी अथॉरिटीज को चाहिए कि आप अपना सेल्स और परचेज ठीक से डिक्लेयर कर रहे हो या नहीं. आपके बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को रिक्वायरमेंट है कि आप जो प्रॉफिट दिखा रहे हो उसमें से आपने इंटरेस्ट का डिस्क्लोजर बराबर दिया हुआ है या नहीं, आपके रीपेमेंट बराबर हो रहे हैं या नहीं. So everyone is having a kind of different opinion, or everyone is expected to, or everyone is trying to interpret your financial statements in the different way. If these people are having a different kind of variety of requirements, for them all, why not to prepare the common statements which will be useful to these all? And that's why these are called as general purpose financial statements, which are not prepared according to the requirement of a particular person. These are made as per the requirement of everyone concerned. And that's why those are called as general purpose financial statements. Now, these general purpose financial statements include the income statement, what we call as the profit and loss account or the profitability statement. It includes the positional statement, what we commonly call as the balance sheet. It includes the cash flow statement, which is prepared to know the cash position of the business, that how the cash is flowing, from where the cash is coming into the business to where the cash is applied into the business. And the notes to accounts, that is wherein you provide the details of how and on what basis, what are the different policies, what are the different principles that you have followed for preparing your financial statements. That is what is covered in the notes to accounts. Now, as far as our basic account lectures are concerned, we are not going to talk about these two.
We are not going to talk about cash flow statement. We are not going to talk about notes to accounts. We'll primarily focus on the income statement and the positional statement. The income statement, which is what we call as the profitability statement, this is basically prepared as per the nature of one's business. What kind of business you are doing, based on that you will decide that what kind of statements or what kind of information has to be prepared. The income statement basically include a manufacturing account, a trading account, and a profit and loss account. Now, when it comes to a manufacturer means what? The person who is purchasing some raw material, purchasing some product, doing the process on that, making some new product and selling that new product in the market. That is what we call as a manufacturer. Like if you take the example of Apple, सफरचंद नहीं, वो खाया हुआ सफरचंद, that is Apple Incorporation, iPhone. Now this Apple Incorporation, what they do, they purchase the chipset, they purchase the kind of different circuitries, they install those all together and they sell that single unit in the market called as iPhone. So Apple Incorporation therefore will be called as what? A manufacturer. Take another example. Tata Motors. What Tata Motors is doing? They're producing the motor of a vehicle. Then they're purchasing the tires from the market, they're purchasing the wagons from the market, they're purchasing the castings from the market, and they're constructing the trucks and vehicles out of that or not. So even Tata Motors will be called as what? A manufacturer. A manufacturer is basically interested to know, to understand what is the cost of production on an annual basis, how much profit that I have made from my core business, and how much is my net profit of the business. And therefore, the Tata Motors kind of organization, any manufacturer will prepare what? A manufacturing account, a trading account, as well as a profit and loss account. Whereas, now what is this manufacturing account, trading account, profit and loss account? इस सब चीजों को explain करूंगा, इन सब के फॉर्मेट भी बना के दिखाऊंगा, but for now we'll just focus कि कौन क्या बनाएगा, right? Then if it is a trader, trader means what? The person who is carrying out the activity related to only buying and selling the goods. This is not the person who is converting anything to anything. टाटा मोटर्स का डीलर, टाटा मोटर्स की गाड़ी आती है और वो गाड़ी को बेच देता है, या सपोज कोई स्टेशनरी डीलर है, बुक्स बेचने वाला बंदा, वो बंदा बुक्स खरीदता है और बुक्स बेचता है, वो पन्ने खरीद के उसका बुक बना के नहीं बेच रहा है। क्लासमेट पेपर खरीदता है, उस पर प्रिंटिंग करता है, उसका बुक बनाता है, फिर बेचता है. So classmate is a manufacturer, that is ITC is a manufacturer, but the person who is a dealer of classmate, he is simply buying those books from ITC and selling it as such or not. So that person will become a trader. तो ट्रेडर को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, therefore trader is not going to make any kind of anything called as manufacturing account, but he is also interested to know कि मेरे कोर ट्रेडिंग एक्टिविटी में से मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है और मुझे अल्टीमेटली मेरे बिजनेस में से कितना प्रॉफिट हुआ. So what trader is going to do? Trader is going to prepare a trading account,
and a profit and loss account. And then comes a service provider. Who is a service provider? The person who does not deal into the goods at all. Ekatvam, we are not dealing in goods. We are only imparting education. So as we are not involved into anything called as manufacturing or trading, therefore we are not going to prepare manufacturing or trading account. We'll simply prepare what? Only profit and loss account. Am I clear for everyone? अगर आपको याद होगा, मैंने बहुत शुरुआत में जब हमने अकाउंट्स की शुरुआत की थी, तब डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, इन बहुत सारी चीजों के बारे में चर्चा की थी. याद है? That all will be useful now in your final account का डिस्कशन. अब तक हम लोग जितनी भी चर्चा करके आए हैं, चाहे वो एडजस्टिंग एंट्रीज के बारे में हो, चाहे वो बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में हो, चाहे वो रेक्टिफिकेशन के बारे में हो, these all will be useful now. So today's homework is you are supposed to revise and be wise with whatsoever discussions that we have had till date. You have that revision for today as well as tomorrow. 2 दिन दिया तुम लोगों को. Our next lecture I'll conduct on day after tomorrow, that is on Friday. Timing कल announce करूंगा. So 2 days you do the complete revision of what we have done. That all will be useful when we are discussing the final account. All right. So we'll meet on Friday. Thank you.